हेलो गाइस, मैं ऋतुजा नमस्कार। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आउटपुट फील्ड डिवाइसेस। तो चलिए देखते हैं। आउटपुट डिवाइसेस, रिले, कॉन्टैक्ट, सोल्यूटाइन फाइल्स, मोटर्स, लैम्प, ब्रेक्स एक्सेट्रा। मतलब हम लोग पिछले सेशन में हम लोग ने देखा था इनपुट फील्ड डिवाइसेस। इस इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं डिवाइसेस आउटपुट फील्ड डिवाइसेस। Relay. Relay. It is an electrical switch that open and close under the another electrical circuit. It con, contactor. It is reflected, established, and interfaced electrical power circuit. मतलब कॉन्टेक्टर्स में क्या है कि वहां से मेरे आउटपुट है, मतलब मैं जैसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई इनपुट करने वाली हूँ उसमें से इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट को जनरेट करने के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्टर यूज करता है। बट फॉर एग्जांपल रिले के लिए वगैरह ऑपरेशन, when on the current flow through the coil, de-energize the armature is held away from the core of the coil by the spinning tension। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं सोलेनॉइड की डायग्राम दिखा रहे हैं। बिफोर गोइंग 24 वोल्ट डीसी सप्लाई और बिफोर गेव 24 डीसी सप्लाई वोल्टेज डीसी सप्लाई। मतलब ये मेरा ओपन हो गया तो मेरी बेल क्या हुई, डी एनर्जाइज्ड हुई और क्लोज होने के बाद energized हो गई coil। When the coil is energized, it process an electromagnetic field. Action of this is field in turn case the physical movements of the armature। तो मेरी क्या करता है कॉइल, तो when the coil is energized to it produces an electromagnetic field device। मतलब मेरी कॉइल क्या करेगी, जब एनर्जाइज होगी वहां से प्रोड्यूस होंगे, फिर हमारी इंक्रीज होगी मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिवाइसेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी वहां से और एक्शन फील्ड इन टर्न। तो फील्ड टर्न्स हो गए और मेरे आर्मेचर मूवमेंट करेंगे, आर्मेचर कॉइल मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट ऑफ द आर्मेचर कॉजेस the contact points of the relay मूवमेंट पॉइंट कांटेक्ट करेंगे मेरे आर्मेचर कॉजेस पर। The coil contacts are included from each other therefore under normal conditions number of electrical circuit will existing between them। मतलब मेरा यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा कॉन्ट्रैक्टर है, ये पावर कॉन्ट्रैक्टर है, ये नॉन ऑन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स है एनओ और एनसी एक्सट्रीमिटली कॉन्टैक्ट्स है। तो ये मेरी पावर कॉन्टैक्ट है और ये मेरी कॉइल वाइड, ये मेरी वायरिंग डायग्राम है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, मेरी L1 L2 T1 T2 T1 T2 T3 ये पावर कॉन्ट्रैक्टर। Motor. It is an electrical machine that converts electrical energy into mechanical energy. Electrical motors are used for produces linear or rotating force torque. मतलब मेरी क्या है, मोटर क्या है, मेरी इलेक्ट्रिकल मशीन्स that convert into electrical energy into मैकेनिकल एनर्जी। मोटर क्या करती है, मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है इनटू मैकेनिकल एनर्जी में। हम लोग मोटर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं और उसके बाद वो जो हमारे आउटपुट फिर वो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में और हमारा आउटपुट मैकेनिकल शो होता है। सोलेनोइड वैल्यूज, it is electromechanical devices which is used to obtain that mechanical movement in machineries by utilizing fluid or air pressure। ये देखिए यहाँ से सोलेनोइड वाल्व का कनेक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 24 वोल्ट डीसी सप्लाई है। एक फ्लैग बैक डायोड है, एनो रिले है मेरा, एनो रिले, ये मेरा रिले है 24 वोल्ट डीसी सप्लाई। यहाँ से फिर से मैंने यहाँ से सप्लाई आएगा डायोड के थ्रू, तो ये मेरा ब्रेक होके यहाँ से ओपन, ये मेरा ओपन हो गया, ये मेरा क्लोज है, अब वो नॉर्मली ओपन हो गया। वहां से ये नॉर्मली ओपन है, अभी इसे जैसे मैं सप्लाई देती हूँ वो नॉर्मली ओपन होता है, नॉर्मली क्लोज होता है। वहां से रिंग सोलेनोइड फिर वहां से आउटपुट मुझे दिखने फ्लो करके। ये मेरे लैंप है, लैंप इट इज द आउटपुट इंडिकेशन प्रोसेस। circuit breaker, a circuit breaker is an automatically operated electrical switch designed to the protective an electrical circuit for damage caused by overcurrent or overload, short circuit, and we can may also through the PLC। मतलब सर्किट ब्रेकर हम लोग क्या करते हैं, मैन्युअली ऑपरेट भी कर सकते हैं और PLC भी करते हैं, तो हम लोग सर्किट ब्रेकर दोनों ही करते हैं। तो गाइज इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप वॉचिंग और नेक्स्ट